Are you preparing for CLAT and other law and Hi guys, I am really very sorry. It is on a very short notice that my camera is not working today. So there will be a little problem right now. You will not be able to see me. You just will be able to understand the lessons here and whatever I will be teaching you. So I think you will be understanding whatever I will teach. बस प्रॉब्लम ये होगी कि आप मुझे देख नहीं पाएंगे. ठीक है, I'll be audible. ठीक है, I'll be audible all the time. If you have any problem while I am teaching, just give me a sign in your comment box, or you can write in your live chat option. ठीक है, I'm really sorry for a trouble that I'm causing right now, because it was really on the short notice. And totally my problem and my bad. I apologize for this situation. And let's begin with our lesson today. But don't underestimate the power of voice. ठीक है, आवाज की ताकत को मत दबाइएगा. ठीक है, तो जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, पहले तो दे शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड देन वी विल बिगिन विद आवर लेसन टुडे. ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत है आज आप मुझे देख नहीं पाएंगे, आप खाली मुझे सुन पाएंगे. और सुनने से भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो रही होगी. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट कम इन योर लाइव चैट ऑप्शन एंड जस्ट आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस सिचुएशन. चलो स्टार्ट करते हैं. आज का लेसन हमारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अ डिस्क्रिप्टिव टाइप राइटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे राइटिंग. ठीक है, जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स आपके, या फिर यू पीपल हु आर लर्नर्स हु आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट in your competitive exams, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए सेशन थोड़ा सा ज़रूरी है. सो प्लीज़ बी विद मी ऑल द टाइम एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. Please, it's my humble request, do have your paper, copy or pen with you, so it will be really easy for you to note down the important points. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. अनअकैडमी के बारे में एवरीबडी नोज व्हाट इज अनअकैडमी, एंड इट्स द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर all the aspirants और all the competitive students और students who are willing to learn. ठीक है, तो उसके अंदर डीप में नहीं जाते हैं. we'll start with our चैप्टर. ठीक है, कैसे रजिस्टर करना है? अगर आपको मेरा चैनल या मेरी पढ़ाने की द प्रोसीजर आई टेक फॉर टीचिंग, you like it, you can register on your Unacademy platform. It's very easy. You just have to download the Unacademy learning app on your phone, and you just have to go with the process. आप रजिस्टर कर लोगे आराम से. देयर इज नथिंग वेरी हार्ड ऑन दिस योर लर्निंग ऐप. आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, एंड यू हैव टू इंस्टॉल, पुश इंस्टॉल बटन. आपका मोबाइल नंबर, योर मेल आईडी, योर नेम, दैट इज all it needs, and you are ready to go. Now the part comes where subscription is there. सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करना है? सब्सक्रिप्शन पार्ट में आपको ये बताना है कि कैसे यू हैव टू चूज योर प्लान. आपको देखना है आपके अकॉर्डिंगली व्हाट प्लान इज सुटेबल फॉर यू. बट नॉर्मली वी सजेस्ट, और आई सजेस्ट, गो फॉर 12 months, बिकॉज इट इज considered reasonable on the money part, on the monetary part, and also your all the topics, all the plan structured courses are अराउंड 8 to 9 months. अगर आप पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपको आइडिया होगा कि 8 से 9 महीने आपको लगते हैं किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, एंड नाउ वेयर आई कम इज द पार्ट वेयर माई रेफरल कोड इज यूज. रेफरल कोड आपको यूज करोगे तभी आप मेरे से एडवांटेज ले पाओगे. दैट इज, यू विल गेट 10% मोर डिस्काउंट ऑन योर ऑल द सब्सक्रिप्शन प्लान्स. ठीक है, 10% का सब्सक्रिप्शन प्लान पे आपको डिस्काउंट मिलेगा इफ यू आर टेकिंग माई कोड, दैट इज KT10. ठीक है, रेफरल कोड. ओके,
Now coming to our positive thought of a day, I normally start my classes or my sessions with a positive thought. मेरी rituals जितनी होती हैं, be it on Unacademy or be it on YouTube, they are starting with the positive thought. And today's positive thought is given by legend, you can say, APJ Abdul Kalam. ठीक है? To be like sun, you need to burn like sun. So means it is very clear कि अगर आपको you want to shine like sun, you want to be like sun, you have to burn like sun. आपको मेहनत भी सन की तरह ही करनी पड़ेगी, सन जैसा बनने के लिए. ठीक है. तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. हमारा टॉपिक जो है आज का, दैट इज वेरी इजी येट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पीपल फाइंड इट रियली टफ to make it more promising in your competitive exam. So I take the session in every day at 9:30. मेरा क्लास 9:30 बजे डेली होता है. Unfortunately, you people are not able to see me today, but due to some technical problem. But don't worry, it is not on the regular basis. So you can just ask your questions in your live chat and like, share and subscribe the channel. ठीक है. यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऑल्सो. आप केशकी तिवारी के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हो. ठीक है. चलो अभी देख लेते हैं टॉपिक हमारा. टॉपिक फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर, दैट इज एसे राइटिंग. अब एसे राइटिंग में आपको बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है. वन इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड इज योर बॉडी पैराग्राफ एंड योर कंक्लूजन. ये 3 चीज़ें जो है आपकी, ये आपकी लेटर राइटिंग में भी मैं समझा चुकी हूँ, एंड इन योर एसे राइटिंग ऑल्सो. दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स आर नेक्स्ट पार्ट. ठीक. पहले यहाँ देख लेते हैं. एन एसे इज नथिंग बट अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग on a particular topic. ऐसे होता क्या है? It's a short piece of writing on any particular topic given to you. ठीक है. What sets an essay apart is not just being error free in terms of grammar and spellings, but also the structure and flow of ideas in the essay. So all the things which are introduced in your essay should be concluded or be into the process which is given here. ठीक है. इसी प्रोसेस में होनी चाहिए. द प्रोसेस इज इंट्रोडक्शन, देन कम्स योर बॉडी पैराग्राफ यू कैन से, एंड योर कंक्लूजन. ठीक है. ये 3 चीजें हैं. दीज आर द 3 एसेंशियल पार्ट ऑफ योर essay. Basic but ideal structure. This is the basic but ideal structure for your essay writing. ठीक है. 3 चीजें आपको माइंड में रखनी. दैट इंट्रोडक्शन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड. 3 चीजों में फर्क दिखना चाहिए कि कहाँ आप शुरू कर रहे हो, कहाँ आप बॉडी ऐसे की लिख रहे हैं, एंड कहाँ आप कंक्लूजन दे रहे हैं. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर पार्ट वेयर वी विल एक्सप्लेन हाउ टू राइट. ठीक है. मास्टर द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग. अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, दैट यू कैन बिल्ड अप अ गुड एसे वाइल राइटिंग. ठीक. पहली बात तो आपका टाइटल होना चाहिए. बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. दैट टाइटल शुड बी देयर ऑन द टॉप ऑफ योर एसे. ठीक है. देन योर introductory paragraph should be there. That introductory paragraph will have what all things that are written here. Bodily introduce your topic. एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का तरीका उसमें होना चाहिए. गिव्स रीडर एन ओवरव्यू आपके पूरे टॉपिक का उसमें दिखना चाहिए कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं. वो उसमें एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए इन योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ठीक है. सेकेंड और थर्ड आपका जो पैराग्राफ होते हैं, दैट डेवलप्स द आर्ग्यूमेंट एंड आउटलाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन. जो भी आपने इंट्रोडक्शन दिया होगा उसके रिलेशन में ही सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ भी होते हैं, बट दे गिव यू एन आर्ग्यूमेंट और आउटलाइन. ठीक है. जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेशन में आपका जो आर्ग्यूमेंट है, वेदर इट इज फॉर यू कैन से इन अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट, ये आपका उसमें दिखना चाहिए. ठीक है. फॉर और अगेंस्ट. ठीक है. ये क्लियर होना चाहिए. प्रूफ पॉइंट्स मीन्स इफ यू आर गिविंग प्रूफ रिलेटेड टू योर टॉपिक, दैट मेक्स योर टॉपिक रियली स्ट्रॉन्ग. ठीक है. बहुत आपके टॉपिक में अगर प्रूफ्स एडेड हैं, topic which you are taking, and it is containing some proofs related to your topic, then your topic makes more sense to the examiner.
देन कंक्लूडिंग पॉइंट में आप क्या करोगे, टाइज ऑल आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स टुगेदर, ब्रिंग्स द रीडर टू द कंक्लूजन। ऑल द आइडियाज मीन्स आपके आर्ग्यूमेंट्स और जो आइडियाज आपके खुद के हैं एज अ राइटर ऑफ योर एसे, आपको वो कंक्लूजन में डालना होता है। दैट यू शुड बी क्लियर ऑन योर पार्ट, आपके खुद के कंक्लूजन, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू फील अबाउट द टॉपिक, यू शुड कंक्लूड विद योर यू शुड कंक्लूड योर टॉपिक विद दैट। ठीक है, ब्रिंग द रीडर टू द कंक्लूजन, एक कंक्लूडिंग पॉइंट पे खत्म करना जरूरी होता है टॉपिक को। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक नॉर्मल आप ऐसे राइटिंग में, चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप एक बेसिक नॉर्मल ऐसे लिख रहे हो, इसमें ये सारी चीजें ही फॉलो होती हैं। ठीक, टॉपिक्स जो आप पढ़ सकते हो, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल when you are sitting for your exams. ठीक है, these are some of the topics which I have taken. Caste system continues to plague Indian society. This is a very common topic. I think if you are studying and if you are in the flow of studies, you must have read this topic. ठीक, so this was the first topic. Then your your second topic is about your section 377. You have to give your views on this. That means your question is asking itself that you have to give your views. It have a different structure same hota hai, introduction, your body and your conclusion, but here you have to give your own views that the question is asking you. If the question is asking you about your own views, you will have the advantage of दिस पार्ट। ठीक है, ये सेक्शन का एडवांटेज आपको मिल जाता है जहाँ पे आपको खुद के व्यूज देने होते हैं। ठीक है, जहाँ पे टॉपिक आपको एक प्रॉपर, जैसे यहाँ पे ऊपर फर्स्ट वाला टॉपिक जो है हमारा कास्ट सिस्टम जो है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन दिस इंट्रोडक्शन आपको you have to explain in first paragraph about the plague, or you can say about the caste system, from which what time it has been started and what are the situation right now, and then you have to come to your body part. But यहाँ पे आपको जो स्टार्ट करना होगा, यू कैन स्टार्ट विद द पॉजिटिव नोट, बिकॉज आप अगर आप फॉर में हो गए या अगेंस्ट में हो गए, यू कैन बी वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग। Adoption of heritage site in India. Now this is a very important topic when it comes to your you can say your हेरिटेज पार्ट। ठीक है, हेरिटेज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की हेरिटेज साइट से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू योर हेरिटेज साइट्स। ठीक, तो ये डेवलप करेगा आपकी नॉलेज about the history, or you can say about the examiner will be able to understand that you have the knowledge about the heritage and not, or what is your perception about adoption of heritage sites. ठीक है, safety of women in India, this is the very common topic which is taken from the initial stage if you are studying. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, but it is very conflicting topic. लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड when it comes to your conclusion point, they lack their point, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लैक कर जाते हैं when these kind of topics are taken up, like this one, safety of women in India. ठीक है, आप you start with a good note, but you end, or your body is lacking in the information, or you can say factual information से लैक कर जाती है. So keep in mind while writing these such easy topic is not at all easy. ठीक है, बहुत आसान नहीं होता है इन टॉपिक्स को अटेंड करना. And again I'm telling you people, might be I'm not visible on the screen, but you can obviously hear me. सुन पा रहे होगे आप लोग मुझे, तो प्लीज एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड डू यू कैन ऑलवेज इंटरैक्ट विद मी while the session is going on in the live chat option. ठीक, चलो, now coming to our another topic, that is women empowerment. This is also related to a positive thing. Women empowerment, how it is introduced in India, how it is going on right now, and what are the pros and cons about this situation, and what is the situation, current situation in relation with this topic. इस topic को उठा के आपको उसके बारे में introduction लिखना है. First of all, the women empowerment, what it means and what it is considered in our country, and in your body part, in the body of your essay, you will conduct what is in relation with the factual information. आप सारे facts और जो आपके authentic चीजें हैं उसको लिखोगे, then your essay will be more solid if you are going for these such
important yet very easy topics. ठीक, वुमेन इक्वालिटी, दिस इज और दीज बोथ टॉपिक्स आर वन और द सेम थिंग, बट यहाँ पे आपको लिखने का तरीका थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि आप लिख कैसे रहे हो। इसीलिए जो आपका स्ट्रक्चर है ऐसे का वो बहुत ज़रूरी होता है वाइल राइटिंग एन ऐसे। ठीक है, आप अगर ऐसे लिख रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पहले तो आप माइंड में एक होता है ना फॉर्मेट और डायग्राम, यू शुड क्रिएट अ डायग्राम in your mind that you are clear about the topic and what you have to write inside the body of the topic and in the conclusion. Both the parts are very different. If you will connect both the part, because conclusion is the part where you have to tell the examiner or the person reading that you know about the topic and your point of view is clear about the topic. And in your body part you have to put the facts in the body of your essay. ठीक है, फैक्ट से रिलेटेड अगर आप डालोगे रादर देन पुटिंग अ स्टोरी, देन इट विल मेक योर essay more eligible. ठीक, स्वच्छ भारत अभियान, everybody knows this topic is very common right now after the after our Prime Minister Narendra Modi ji has introduced such thing in India. So this is very common and very important from the aspect of your exams. ठीक, now coming to these topics are like problem of NPA in India and cashless economy. These topics are equally important when you are attending your competitive exams. I suggest you people to go through these important topics, and ये topics आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा daily इसमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, but you have to practice writing taking these topics. ये टॉपिक्स अगर उठा के आप प्रैक्टिस करते हो तो श्योरली यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दीज टॉपिक्स. वेरी कॉमन येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, so those who are watching, or you can listen, or I can say listening to me and watching my class, so you can just like, share and subscribe. And I want to tell you people that I'm really very sorry today my cam is not working, so that's why I'm not visible on the screen, but you can hear my voice and you can understand what I am trying to say. ठीक है, जो भी लेसन जो भी सेशन आज मैं ले रही हूँ वो एकदम क्लियर है. आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन जस्ट कम इनटू लाइव चैट ऑप्शन एंड कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चन. चलो अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन इंडियन इकोनॉमी. इसके बारे में तो लॉट्स ऑफ फैक्ट्स यू विल बी गेनिंग. आप आज से मेरे ख्याल से जब से जीएसटी लागू हुआ है, द डे इट हैज़ बीन लेवीड, तब से लेके आज तक क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर एंड इट इज़ नॉट very easy topic to go with. ठीक है, when you are writing about GST and sitting in the competitive exam, giving the examiner a point where he can deduct your marks, this topic, GST topic, is not very easy. You need to know all the factual information about the topic, then go on writing on this topic. ठीक, साइबर क्राइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड करते हैं. अगर मतलब नहीं पता है साइबर क्राइम का तो लोग इसको नहीं समझ पाएंगे. तो साइबर मीन्स रिलेटेड टू योर इंटरनेट, और यू कैन से साइबर वर्ल्ड. ठीक है, यू कैन से वर्चुअल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है साइबर क्राइम. इट्स नॉट अ विजिबल क्राइम बट इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर ऑनलाइन क्राइम. ठीक है, जो आपका फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन या आपके बैंक्स के फ्रॉड होते हैं थ्रू योर मोबाइल, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर साइबर क्राइम. मोबाइल एंड इंटरनेट हैव ब्रॉडन द जनरेशन गैप. This is the topic which is very essential in today's world and very easy to write about this topic if you connect this topic to yourself. अगर आप इस टॉपिक को मोबाइल एंड इंटरनेट हैव ब्रॉडन द जनरेशन गैप, अगर इस टॉपिक को आप अगर खुद से कनेक्ट करके चल रहे हो, दिस इज वेरी इजी टॉपिक टू गो विथ. ठीक, social media pros and cons. Now this is the very important topic when it comes to social media. Everybody knows India's fourth pillar is social media. ठीक है, चौथा स्तंभ जो हमारे देश का है दैट इज सोशल मीडिया. उसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स डायरेक्टली दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स. दैट मीन्स यू हैव टू पुट all the factual information about the social media into your essay body. ठीक है, essay के body part में, body का जो part है आपका body paragraph जो है उसमें आपको pros and cons दोनों लिखने हैं. then into your conclusion part, your point of view, that
which part you go with, either pros or cons, either advantages or disadvantages, that you have to choose and be very precise with your choice. ठीक है, ये इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज अगर आप प्रोज और कॉन्स दोनों के साथ जा रहे हो, इट लैक्स योर इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर एंड इट विल नॉट लीव यू विद अ गुड पॉइंट. ठीक. Effects of gadgets on developing brain. Now, this is also one topic where you are connecting to the topic, then you will be easily attempting this टॉपिक. ठीक है, ये टॉपिक अगर आप खुद से कनेक्ट करके चल रहे हो, इफ यू आर कनेक्टिंग दिस टॉपिक टू योर डेली लाइफ, देन you will easily be able to understand and go with this topic. What would be the COVID? Now this topic is a little essential when it comes to your I think past 6 month की जो हमारी लाइफ रही है उसके रिलेशन में अगर आप जाते हो, तो दिस आर सेकेंड लास्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल टेक दिस टॉपिक फॉर आर डिस्कशन. ठीक है, इन आर later slides we are going to discuss this topic. What would the COVID pandemic be like without internet? Now this is the topic which is correlated with your internet and COVID. ठीक है, ये पैंडेमिक और इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. लेट्स हैव द फुल वर्जन ऑफ आर दिस स्लाइड. ठीक है, okay. Now last option is depression and work from home, explore the relationship. Now this is also very important topic because it is taken into consideration for life that we are having right now. People are composed and stored in their own homes, not allowed to move freely because it's a situation of pandemic. Rather we are having unlock situation right now in our country. पूरी कंट्री में अनलॉक की सिचुएशन चल रही है. देन टू वी आर वर्किंग फ्रॉम होम and having a part where we are composed to one situation, composed to one place. So how it is related to depression and work from home situation. ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन समझाना है. ठीक है, दिस इज okay. The people who have joined me right now, I'll just request you people to go and like, share and subscribe the channel. And in today's session I can say that I am not visible on the screen due to some problem in my camera, in my camera, laptop camera. So just don't worry about it. It's not a permanent situation. You will come over it. We will come over it. Just go with the topic. Today's topic is little important if you are attempting for your descriptive type. So I want you people to just put on your queries in your chat box, live chat option, and we will have a thorough information on that. Okay, we'll discuss thoroughly on that also. Chalo, I have taken the topic which I told you people that it is important for from the perspective of past 6 months we are having in our country, in our life. Totally it has changed our world around. ठीक है, दुनिया बदल चुकी है सिर्फ एक वायरस की वजह से. उस वायरस को हम लोग इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, what how and why it is connected with your internet. We will discuss in this session about it. चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. आई हैव रिटन होल ऑफ द एसे फॉर यू. आई वांट टू डिस्कस द पॉइंट्स वेयर स्ट्रक्चर कम्स इन योर एसे. जहाँ पे आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो दिस इज योर इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहाँ पे आप उस टॉपिक के बारे में बताओगे. यू विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक वेयर इट हैज बिगन, कहाँ से शुरू हुआ, क्या नाम है, कहाँ तक जा रहा है, क्या सिचुएशन लेके आया. All these stuff will be discussed in your introduction paragraph. Since 11th, we'll start with the topic. Since 11th March 2020, the day when the lethal SARS-CoV-2 was declared a pandemic by the World Health Organization, the human civilization has encountered an unwanted tremor in their lives.
So use some fancy words, not very tough, but you can use these fancy words in your essay, because it will obviously attract your examiner to read the essay further. ठीक है, जो अगर आप बहुत ज़्यादा एक दो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो योर essay will sound little spontaneous and dull, and the person who is reading your essay will lose the interest. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन से ही अगर अपने एसे में डालोगे, योर एसे विल साउंड मोर इंटरेस्टिंग. Terms like social distancing and lockdown have led to seclusion, which is indeed the paramountcy of the hour. Now, these are the words you need to know the meaning. Agar aap, if you're watching my live channel right now, just write it down, some important words which I have mentioned here, and you can yourself find out the meaning, because I am taking the lesson and I have to take it in 1 hour. I can't tell you the meaning of each and every word. You can just note down the words, and come back to me in the comment section or in the next class which we will have, and we will discuss about the words which we have taken in our essay. ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर यहाँ पे मुझसे पूछोगे तो मैं मना कर दूंगी, but you have to understand that in 1 hour I have to complete whole of the topic. So अगर हम लोग distribute करके चलेंगे तो it will help us out. ठीक है, whatever word you are finding difficult, just note the word down, either find the meaning by yourself and or wait for me for the next session to tell you the meaning. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर एक एक वर्ड समझाते चलेंगे, बिकॉज आई एसेंशियली वांट टू टेल यू द स्ट्रक्चर समझाना चाहते हैं एंड इम्पोर्टेंट समझाना चाहते हैं, तो अगर एक एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा. ठीक, human being is a social animal, and he slash she needs to socialize with other people in order to content her or his social and emotional needs. But due to pandemic, physical interference has become paradoxical. Now this is the part, आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे कोविड-19 या कोविड पैंडेमिक को एक्सप्लेन किया है, एंड व्हाट आर द टर्मिनोलॉजी बीइंग यूज्ड इज रिलेटेड टू द pandemic or is related to the topic. Like if you can see the World Health Organization or human civilization or social distancing or your lockdown, these are the words which are very important if you're writing such essay, to mention these words, because if you are writing these words, these are equally essential, but knowing and putting it in the correct form is very important. ठीक है, तो यहाँ पे लेटर की आपकी यहाँ ऐसे की आपकी स्टार्टिंग हो गई, दैट यू आर टेलिंग दैट व्हेन इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ पैंडेमिक एंड what and how it has changed the life of the people, how it has changed the emotional and your socializing part of your daily life. ठीक है, जैसे आपका लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग इंट्रोड्यूस हुआ, what changes it brought to your daily life and how is it putting everything in different. ठीक है, चलो, although physical interaction, now this is your body part, your body paragraph of your you can say of your essay. This is the body paragraph. Now you have to start with the factual things in your essay. ठीक है, although physical interaction has come to halt means pause or stop, you can say it has taken a pause in our daily life. Halt means pause. But the world is now connected through the virtual media, that is internet. ठीक है, virtual means internet. ठीक है, जहाँ भी virtual word use करें तो that means you are talking about internet. Internet, apart from consolidating people together, has also contributed to taking decisions of national interest, business words, public administration, and many more. Like you people have been watching throughout our lockdown or throughout our social distancing or our pandemic going on right now in India or whole world, you can say, the virtual media or internet has placed a very vital role.
How? Because we are having, now here we are talking about the advantages of the internet in relation with COVID. Understand it very clearly how internet has connected people in the time of this pandemic. That has been discussed in your first paragraph of body paragraph में जो आपका first paragraph है, that is related to your positive thought or advantage of internet we are having while pandemic. ठीक है, यहाँ डिस्कस किया गया नेशनल इंटरेस्ट और बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी तरीके की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए इंटरनेट हैज़ ब्रॉट पीपल टुगेदर. ठीक है, इंटरनेट ने ही जोड़ रखा है. जैसे आप अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, दैट यू पीपल आर सिटिंग एट योर प्लेस, हो सकता है आपकी फैमिली आपसे दूर हो, तो व्हाट इज कनेक्टिंग यू पीपल, दैट इज इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू यू पीपल आर डूइंग वॉइस कॉल्स और you are connected through video calls with your parents, with your family. So it is more easy to understand when you are connecting yourself to the topic. ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करिए. नेशनल इंटरेस्ट के जितने इश्यूज हैं, जैसे यू पीपल मस्ट हैव वॉच्ड आवर प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर टॉकिंग थ्रू द दिस वर्चुअल मीडिया. आपने देखा होगा कि कोई भी आपस में बैठ के बात नहीं कर रहा है, दे आर टॉकिंग थ्रू वर्चुअल वर्ल्ड. ठीक है, आपको वीडियोज कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही सारे डिस्कशंस हो रहे हैं. ठीक है, लेट अस नॉट प्रिडिक्ट सर्टन सिचुएशंस ऑफ करंट सिनेरियो विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेट एंड ऑल्सो इट्स कॉन्सिक्वेंस. नाउ यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट लेके हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया. द बॉडी हैज बीन स्टार्टेड विद द पॉजिटिव नोट, yet we are considering the consequences of existence of internet की consequences भी इसमें we will discuss. Now business कैसे किस सेक्टर में it has been approved the quality of virtual internet during our pandemic, वो हम लोग देख लेते हैं. मैंने इसको पॉइंटर्स में इसलिए डाला है बिकॉज इट विल बी इजी टू टेल यू दैट दीज ऑल पॉइंट्स विल बी टेकन इन योर body paragraph. Business sector, numerous businesses houses have shut down their activities due to lockdown and liquidity crisis. Now liquidity means currency or you can say money crisis. Okay? Liquidity का मतलब होता है money. It is related to your money. ठीक, the ones that are operational have opted for digital methods or carrying on their activities. Now number or many businesses have been liquidated or you can say dissolved during the lockdown because they were not running their activity, and all the activities, physical activities, were shut down. Now those companies which are operational were opting for the method that is known as digital or virtual world. ठीक है, this was the method which was opted by the operational or you can say operational sector of business which were having their houses in run. जो business houses run कर रहे थे, उन्होंने digital method को लिया to operate their activities. A lot of virtual businesses entities have flourished in this pandemic. We should not forget that due to this virtual business, or you can say this virtual or digital method, many of the companies or many of the businesses have flourished also in this pandemic. You can easily find out by this. You can take a very easy example, the companies or businesses which have flourished in the time of pandemic. अगर आप virtually देखना चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे online shopping has been flourished, Amazon हो गया, companies which are big are flourishing, and the small companies which were running online have flourished too. ठीक है, ऑनलाइन कंपनी जो बड़ी हैं, जो बिग नेम्स है, बिग ब्रांड्स है, वो तो फ्लरिश बहुत ज़्यादा कर ही रहे हैं. उसके अलावा जो छोटे ब्रांड्स ऑनलाइन रन कर रहे थे, जो पहले बिफोर दिस लॉकडाउन वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ ऑथेंटिसिटी, ऑल्सो केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड फ्लरिश्ड. ठीक है, in case if there is nothing like internet that exists in the world, then the online businesses as well as the conventional one operating in the plunge into depression, and
catastrophic economic conditions globally. Now in this sentence, if you are talking about businesses, यहाँ पे the sentence is talking about that अगर internet नहीं exist करता. Now here comes the part where we are talking अगर internet pandemic में नहीं होता, if we were not having that advantage of having internet with us, then the situation would be very drastically changed, and conventional or online business जैसे भी business आपके होते, that would have been shut down automatically, और हमारे जो economy होती वो तो globally shut down हो ही जाती. उसके अलावा the plague, you can say depression was the biggest thing which would have happened during this 6 months. अगर इंटरनेट नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आदमी के साथ क्या होती, पीपल वुड हैव फाइंड इट देमसेल्फ सो, अगर किसी को एक कंस्ट्रक्टेड एरिया में बंद कर दिया जाए 6 महीने के लिए विदाउट एनी फैसिलिटी, अंडरस्टैंड व्हाट सिचुएशन वुड बी देयर. ठीक है, वही चीज होती अगर इंटरनेट हमारे पास नहीं होता. वी वुड हैव नॉट बीन कनेक्टेड विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स और वर्क. अगर हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन तो वो भी हम नहीं कर पाते ड्यू टू the lack of internet, because we were not having the global, or you can say golden virtual thing that is internet. ठीक है, पूरी इकोनॉमी वुड हैव शट डाउन विदाउट इंटरनेट. बिजनेस सेक्टर को ऐसे इफेक्ट करती. ठीक है, अगर हमारे पास अगर वी वर नॉट हैविंग दैट इकोनॉमिक कंडीशन, अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होता तो क्या सिचुएशन होती, दैट आई हैव एक्सप्लेन हियर. ठीक है. Second is your employment. Now, in employment, million of people have become unemployed during the pandemic as a result of halt. Then again, halt means your pause in the economic activities. Large numbers of migrant workers as well as technicians have returned to their native land after job loss. Yet the concept of work from home has been in the pandemic and is possible because the access of internet. Now you have to understand that million of people who were unemployed might have to migrate back to their homeland or native land due to job loss, but there are many more who are working from home in this situation, in this current situation of pandemic, and using this internet as the golden geese. मतलब गोल्डन, आप एक होता है ना गोल्डन एग देने वाली मुर्गी. इंटरनेट इज सॉल्विंग द पर्पस ऑफ दैट golden geese for them, because they are able to work from home just because of the internet. ठीक है, इंटरनेट अगर नहीं होता तो lot of, you can say, whole of the employment sector would have shut down. एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को कैसे इंटरनेट ने बांध के रखा, दैट आई हैव पुट इनटू दिस सेकंड पॉइंट. एम्प्लॉयमेंट मींस दैट पीपल हु वर लाइक small migrant workers, or you can say technicians, those who were having a physical job might have got jobless and moved back to their homeland or native land, but many and number of people are working from home in this situation of pandemic. Without internet, this would not been possible and resulting to even more unemployment. I explained you clearly that अगर pandemic के time पे या we were not having the access to internet or proper condition where internet was not working, then we would have number of more people who were unemployed right now. People got unemployed, that is the total agreed point, but there were many people who are working from home in this current situation and taking the advantage of internet. They are being employed in their sectors. ठीक है, so how pandemic and internet is connected to your employment section, that I have explained in this second point. Coming to education. Now education has also been very important part in our economic sector, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा deflation दिखा है while we are talking about this pandemic और education को connect कौन कर रहा है, internet.
If internet was not there in this situation of pandemic, schools, colleges and everything would have been shut down, totally shut down. But as we have this advantage of internet with us, all the things are running smoothly while we are having the accessibility of internet. In the education sector, how pandemic and internet are connected, this I have explained in the third of our of, you can say, body paragraph. This all things will be conducted in your body paragraph of the essay. Schools, colleges and universities are imparting classes through online software applications like Zoom, Google classrooms and many more. So students do not suffer lag behind in the midst of their session. Midst means in between. ठीक है, किसी भी तरीके की लैग ना हो, किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स की पढ़ाई ना लैग करे. For this, certain apps or certain application, you can say, are there which are providing the facility to take classes online, which is also provided through internet or possible through internet only. Okay. Tests and assignments are submitted by students, or you can say the biggest platform which we are attending the class on right now, that is Unacademy, is also running on internet only. If you are connected to an academy, or if you know how the things are working online, this is the biggest example right here for education sector, that an academy is flourishing and running on the biggest scale right now, and imparting knowledge and imparting education to this all the sector right now, education sector, be it college, be it universities, schools or competitive level. Everybody is getting advantages through live classes which are free also, and if you have subscription, you get the chance of studying with the best educators of an academy. ठीक है, तो इससे आप एजुकेशन को कनेक्ट कर सकते हो. टेस्ट एंड असाइनमेंट्स आर सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स रेगुलरली हु हैव एक्सेस टू बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी. Now this is come into your basic need as we are talking about education. Education sector में अगर हम internet की बात कर रहे हैं, during this pandemic, this internet connectivity has become a basic requirement for us. How? If we will not be having this connectivity of internet in every house, or if in every household, students, or you can say children who are studying in school, colleges or universities, or people who like you, learners who are preparing for competitive exam, would have not been getting the access or getting the power of getting knowledge from the during this pandemic. ठीक है, without these amenities, or you can say amenities means amenities are you can say advantages without these amenities, the education will be halt. Then a halt again means pause, and especially the final year students being the worst sufferers who were about to complete their education. Everybody knows that suddenly we are into a situation where student life and college life or school life is being hampered, जहाँ पे चीज़ें रुक गई थी during lockdown. Now slowly and gradually we are coming to unlock process, जहाँ पे अभी भी ऐसा नहीं है चीज़ें बहुत सही हो गई हैं या everything is normal. We are in the situation where every second person is having this virus and or are suffering from this virus. So इस सिचुएशन में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वर सफरिंग अ लॉट बिकॉज दे वर इनटू देयर फाइनल ईयर्स एंड वर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन. नाउ दे आर स्टक इन देयर लास्ट ईयर विदाउट हैविंग एनी प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी. तो एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन स्टडीज ने एक वरदान की तरह साबित हुआ है. दे आर प्रोवाइडिंग द students they are providing the students proper education, and they are providing them to understand the logic behind using internet. So how internet and education and pandemic, three things are connected together. Major number of students will tend to drop out. Now this was the major problem because students were trying to cope up with their studies but were not able to go along in further because they were
stuck at the point where they were not getting the proper studies. ठीक है, उनको proper classes नहीं मिल रहे थे, proper notes नहीं मिल रहे थे, तो they were tend to drop out from the institute, as they will remain perplexed in the perplexed situation and improbable future, जहाँ पे वो एक confused situation में पहुंच चुके थे and they were improbable, having improbable future. ना फोर्थ पॉइंट जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कनेक्टेड टू योर स्किल डेवलपमेंट, your pandemic and your internet. Now three things together, how it has helped our economy, or how in during this pandemic internet has helped this sector of our economy. Skill development. This pandemic has given people an opportunity to develop their various skills like learning and learning any foreign language, personality development, software skills, music, etc. by pursuing online courses. But without internet, this development will not have occurred. Now, easy to understand that if you would have been connected to social media, you would be understanding this point very clearly, that if the internet part was not available during this pandemic, no other development, or you can say other skills were not being available for learning. Like if you would have, for example, I am telling you that if you would have, if you would have considered taking social media, just say if you are on Instagram or Facebook, you must be able to see that people are getting interested in a lot more skills, like learning baking, or learning some foreign languages, learning personality development classes through ऑनलाइन. ठीक है, जिसको आप ऑनलाइन परस्यू कर पाओ, ऐसे कोर्सेज को पीपल वर स्टार्टिंग टू गेट इनटू इट. That was only happened because we were having a proper access of internet. Okay, during pandemic, internet helped a lot many people to learn or develop their skill set in different sectors, like you can learn foreign languages, personality development classes, or soft skills. Soft skills consist of your baking classes, cooking classes. These were the classes which are considered in your soft skills. And music classes, these were the classes which were conducted during the online classes. आज भी conduct किए जा रहे हैं by many other online courses, जो आपके online courses providers हैं, they are providing online these facilities. That is happening only because of internet. If you are not having internet in your hand, you will not be having this kind of facilities which are connecting internet, skill development and pandemic together. It is solving a major problem in our country or around the world by developing skill sets. ठीक है. Now these were the points where you were talking about the body of the body paragraph of your essay. And now coming to your conclusion part. Now conclusion part will be little easy for you to understand, because मैंने दोनों part आपको समझा दिए हैं इससे पहले. Introduction भी समझा दिया है, and the body paragraphs also I have explained you. The body paragraphs can be lengthy, can have 2 or 3 paragraphs in itself. Then your essay will have the conclusion part. Conclusion में आप 2 paragraph, you can write 1 or 2 paragraph in your conclusion as well. Also, now coming to the conclusion, also the fee charged by online platforms are quite low, and then that of charge to the physical institute. Now this is the very big point which has been explained here, that online platform पे जो आपकी fees ली जा रही है, जैसे आपका Unacademy is taking a very low fee right now, or in the process all along बहुत कम फीस है, rather than what the physical institute or the institutes which are having a existing building they are charging from you. ठीक है, वो enrollment का उनका charge बहुत high होता है. Rather we are providing you very low price and making you learn the same things, leading to more enrollment by people from various sectors of society. In the absence of internet, this would be impossible. अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था.
Above, we were few situations of life and lifestyle without internet. The idea of not having internet access during the current pandemic situation is quite conversible. Now, in here you have to put your point of view. You can see it very easily that the I have put my input in that why internet is important and why it was not imaginable to have this pandemic situation without internet. Yet there are few advantages of not having internet connectivity during a pandemic, as we can associate with our family or more replenish a sense of solitude, and yet there are few advantages now solitude and warmth that we often disregard due to busy schedule. Now here I have told a very easy part, जहाँ पे अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता। इंटरनेट अगर नहीं होता तो पुराने ज़माने की लाइफ होती हमारी। द पीपल वुड हैव कनेक्टेड मोर विद देयर फैमिली, जो कि हमारी बिजी स्केड्यूल की वजह से when we were having a normal life before this pandemic, वैसी लाइफ में हम लोग अपनी फैमिली से अपने फ्रेंड से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, विच आर लिविंग विद अस इन आवर हाउसेज। उनसे कनेक्ट करने का मौका हमको ये पैंडेमिक दे रहा था, बट अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये सिचुएशन हो सकती थी। ठीक है, इंटरनेट है तो वी आर हैविंग ऑप्शंस फॉर आवर daily life ki we are involved in our education also, we are involved in our skill development also, we are involved in our employment also. ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इजीली आपको मैंने समझा दिया दैट एडवांटेजेस इंटरनेट के तो हैं ही, बट अगर इंटरनेट नहीं होता ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक वी वुड हैव relish our sense of solitude and would have connected with our family, which we would not be able to when we were having a busy schedule before pandemic. ठीक है, also due एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है when the pandemic is not, if the pandemic is there, जिससे बहुत सारी चीज़ों को एडवांटेज हुआ है। Also due less pollution and less radiations emitted by mobile towers for high speed in environment will rejuvenate the wildlife, and chirping of birds can heard everywhere. So you would have acknowledged this part where while lockdown or while pandemic is going on, that the noise pollution, or you can say the pollution which is emitted by the mobile towers with their high speed of environment has come to a low level, and the wildlife, or you can say the birds, are very clearly heard in this एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्योंकि लेस इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, लेस पोल्यूशन है हमारे अराउंड, वी आर एबल टू एक्नॉलेज द वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। ठीक है, considering these aspects we can conclude that the cons suppress the pros of not having internet during the pandemic. ठीक है, considering these aspects we can conclude with the essay that cons suppressed the pros of not having internet during the pandemic. Now in the conclusion आपने दोनों पार्ट्स को रख दिया, दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस आपने बता दिया, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, और यू कैन से प्रोज एंड कॉन्स यू हैव पुट टुगेदर। उसके बाद आपको एंडिंग में अपना प्रोस्पेक्टिव देना जरूरी है, दैट व्हाट आर यू गोइंग विद, आप किस सिचुएशन के साथ जा रहे हैं। So it is really very clear that I have concluded my part, that concluding these aspects we are considering these aspects we can conclude that the cons suppress the pros of not having internet during the pandemic. I have gone with the pros, you can say I have gone with the cons of your pandemic with internet. ठीक है, इंटरनेट और पैंडेमिक को कनेक्ट करने के लिए आई हैव टेकन साइड ऑफ कॉन्स। कॉन्स मीन्स disadvantages, advantages, these are two examples of pros and cons, meaning pros क्या होते हैं, pros are advantages and cons are disadvantages. I myself had decided to go with cons because those are very important part of our economy. ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे हमारा इस आज का सेशन थोड़ा सा मैंने इसीलिए लेंथी रखा था, एंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम आई वाज नॉट हैविंग लाइव
thing, or you can say you are not able to see me on your screen, but you are able to hear my voice, and the lesson was very clear in itself that I wanted to tell you people the basic structure of essay should be very clear with you. I will take some other topics for related to your essay again, because I think it is really important to see my face and then have interaction with me. Those who are watching me, just give me a thumbs up in your live chat option. Now I will explain you why Unacademy is important and why you should go for Unacademy. Live classes, जैसे अभी आप मेरा live class attend कर रहे हो, ऐसे ही you will get the top educators from Unacademy if you subscribe to make you educate, to educate you, to make you understand about the topics which are related to your competitive exam or whichever thing you are preparing. ठीक है, clearing all your doubts, solving all your questions. ठीक है, structured course means that if you are subscribing an academy and if you are being a learner at an academy, you are getting a very big advantage of structured courses. Structured courses contains all the planned courses which are prepared by the top educators of an academy with the specified syllabus. ठीक है, now coming to live test and quizzes. This is a very essential part for you as a learner, because अगर आप खुद को evaluate नहीं कर पा रहे हो तो you are not able to understand कि आप पढ़ क्या रहे हो. ठीक है, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि whatever you are studying, you are able to understand it or not, and that only can be possible only through by these live tests, or you can say mock test and quizzes, which are conducted by educators on the daily basis to formulate and to let you know your standing in the where you are standing on your preparation. ठीक है, आप कहाँ अपनी preparation पे खड़े हो रहे हो, कितना आपका prepared है, कितना नहीं prepared है, क्या problems है, that will be easily understood by you if you are attending and if you are having the subscription of an academy. ठीक है, now coming to unlimited access में you can easily understand that if you are having one subscription with you, it is mentioned here, अगर आप एक subscription आपके पास है, you are fully eligible to have the live classes as well as the recorded courses with you according to your comfort level, according to your comfort zone at any device you are using anywhere. ठीक है, तो अगर आपके पास एक सब्सक्रिप्शन है, आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज का भी एडवांटेज फुल्ली मिल रहा है. ठीक है ना, तो अभी this was my time, and I really want to tell you people that I want to tell you people that this was a section जो मैंने अभी आज लिया था. This was the part of the section जहाँ पे essay writing को मैंने explain किया. In next session we will have 2 or 3 examples with the description. ठीक है, जैसे मैंने आज एक टॉपिक उठाया है, 2-3 टॉपिक हम लोग उठाएंगे and we will have a discussion about the language, the structure in more depth. ठीक है, आज मैंने जो उठाया उसमें मैंने क्लियर कर दिया कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसे होता है ऐसे राइटिंग में, एंड व्हाट इज योर बॉडी पैराग्राफ्स एंड व्हाट इज योर कंक्लूजन एंड हाउ टू कंक्लूड योर ऐसे. ठीक है, ये चीजें सारी मैंने क्लियर कर दी हैं. नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट जहाँ पे ऐसे राइटिंग हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे एंड वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट ऐसे एंड लेटर. ठीक है, if you are having any questions, you can just go into your comment box and ask me the question related to anything related to your topic and your English. ठीक है, you can use my code which is mentioned here for your subscription on Unacademy. आप बहुत आसानी से इस कोड को याद कर सकते हो. This is the mantra you have to learn by heart and you have to put into your subscription plan. 10% discount additional you will get if you are subscribing with my code, and you can subscribe the channel. YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड प्लीज़ ये बेल, ये घंटी बजाना मत भूलना. ये घंटी अगर बजा दी तो आपको डेली सब्सक्रिप्शन का यू विल गेट डेली अपडेट्स, और यू कैन गेट डेली notifications that I am going to come and take your class in the morning 9:30 AM. ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज इफ़ यू आर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल यू विल बी अवेयर ऑफ द क्लासेस विच आर गोइंग इन कंटिन्यूएशन. You can follow me on Unacademy also. You by the name Keshki Tewari. I am there on Unacademy. So I will just request you people, be healthy, be safe, and don't
go outside your houses unnecessarily. And we will meet tomorrow again in the morning 9:30. Thank you so much. Have a lovely day.